Hello students, welcome to Chemist Educare, a group of chemist solution. Now in this session we are going to consider lesson number 9, heat from class 7. Now what is a heat? Basically, heat is a one type of energy. Okay. अभी when you consider the heat, what comes in your mind? जब आप heat के बारे में consider करते हो तो घर में अगर हीटर है तो वो सामने आ जाता है। अगर आप कोई फूड कुक कर रहे हो तो इन दैट केस हीट हमें देनी पड़ती है वेसल्स को इन ऑर्डर टू कुक द फूड। इवन हीट अगर हम कंसिडर करते हैं तो समर सीजन याद आता है। अगर हम हीट कंसिडर करते हैं तो वी कैन कंसिडर द बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, so see in the slide there are some examples that will show you what are the causes and what you see what is happening. Okay, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फूड इज कुक because of the heat. Heat is provided and यहाँ पे cooking हो रहा है. So simply because of the heat. Now यहाँ पे a person is having a fever. उसका temperature ज़्यादा है, उसकी body की heat बढ़ रही है. Okay, यहाँ पे आइस है जिसका टेम्परेचर कम है। अगर मैं इस आइस को हीट करती हूँ तो दिस आइस विल स्टार्ट मेल्ट। ओके, ना यहाँ पे देर आर सम पर्सन्स। ओके, विंटर सीजन में ज्यादा ठंड महसूस होती है तो हम लकड़ियाँ जला के हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड वी कैन यूटिलाइज दैट हीट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो द बफेलो विच इज देयर इन द वाटर बिकॉज उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। शी इज फीलिंग द टेम्परेचर इज मोर has a more heat. Okay, so these are the examples that will relate something about the heat. Now let's talk about some activities. Rub your palm against each other and put them on your cheeks. What do you feel? We come to know some properties of heat energy from the examples in this picture. Okay, so जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पाम को रब करते हो तो हीट जनरेट होती है। यू फील योर पाम्स हर थोड़ा सा उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड यू फील योर हैंड्स हॉट। द सन्स हीट हैज मेनी इफेक्ट एंड यूजेस। सन की अगर हीट कंसिडर करें तो हम कपड़े सुखाते हैं, हम वाटर हीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। So, how does the solar heat reach the earth? Why does the heat in the water heated the, to boiling slowly decreases when it is taken off the flame? ओके, तो टेम्परेचर जो है वो वाटर का कम होता है अगर आप उसकी हीट कम कर देते हो। वेयर डज दिस हीट गो? द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब ऑन द ग्लास एंड कलेक्ट्स ऑन द आउटसाइड द ग्लास। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है एयर में दैट इज कूल डाउन ड्यू टू द आइस प्रेजेंट इन द ग्लास एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आइस पे के बाहर थोड़ा से वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। थर्मामीटर है जो टेम्परेचर मेजर करता है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंज ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ द हीट। अगर आप आइस को हीट दोगे तो बाय इफ यू गिव अ टेम्परेचर द आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर। इफ यू हीट दिस वाटर अगेन this water will get converted into the gas. So this is simply the change of state, okay, by because of the heat. ये हमने पहले भी पढ़ा है। Now let's talk about the transfer of heat. अभी हम transfer of heat के बारे में पढ़ेंगे। Why do the halwai wrap up the cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk? Okay, तो हलवाई जो है वो क्या करता है? Simply whenever he do the stirring of the boiling milk, he use the cloth. क्यों? जब भी हलवाई वो किसी भी पतीले में मान लो कि ही इज यूजिंग एनी वेसल स्टील का एंड अगर उसमें वो कुछ बना रहा है तो ऑब्वियसली जो भी हीट है the heat of vessels will get transferred to the spoon and spoon automatically गर्म हो जाता है and just to protect his hand from the heat he uses the cloth. He wrapped the cloth around the end of his slotted spoon because जो heat that is present inside the vessel that will get contact with the spoon as the spoon is continuously does the function of stirring. Okay, तो ये stir होने के लिए वो कांटेक्ट में आता है पतीले के एंड सिंपली द हीट गेट ट्रांसफर।
Why do we hold steel glass in the handkerchief while drinking a hot milk? Okay, तो many a times अगर हमें milk पीना होता है, if it is hot, तो at that time simply we use the handkerchief around us, around the glass, because जो भी heat है milk की, that gets simply hit the surface of the glass, and we should just to prevent our hand from excess of burning. हमें ज़्यादा टेम्परेचर ना लगे, ज़्यादा हीट ना लगे उस मिल्क की, इसलिए हम वो क्लॉथ यूज़ करते हैं। Now, what are the other example of this kind? Make a note of them. When we take a hot object in the vicinity of cold one, the cold object becomes warm and the hot one becomes cooler. जब भी हम किसी भी hot object को consider करते हैं, तो मान लो कि this is a hot object, and if this hot object comes in a uh, contact with the cold object, अगर वो cold object के contact में आता है तो what happens, simply the cold object जो है that will become hot and hot becomes cold, so there is a transfer of heat takes place. क्या होता है वहां पे, simply there is a transfer of heat takes place. Now from this we can infer that heat is transferred from one hot body to cold body. Transfer of heat means the flow of heat from one place to another. Okay, हीट ट्रांसफर होता है, सिंपली वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तब तक चला जाएगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, इक्विलिब्रियम पे नहीं आता तब तक. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन द विंटर? ओके, बिकॉज सी ठंड से बचने के लिए हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन बिकॉज वो वार्म रहते हैं. ओके, गर्म कपड़े रहते हैं ताकि हमारा ठंड से बचाव हो सके. नाउ what are the modes of heat transfer? Conduction, convection, radiation. These are the three modes of transfer of heat. Now अभी हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है. Take a apparatus, bars of stainless steel, aluminum and copper, a candle, a burner, pins. अभी हमें क्या करना है? Take a stainless steel or iron, copper aluminum bars, each about 30 centimeter long, having a same shape. सबका shape same होना चाहिए. Apply a wax spot with the help of candle at a distance of 2 centimeter from each other on all three bars. Stick a pin to each of the spots that is upright. तो यहाँ पे क्या करना है? We have to apply the spot of wax at a different tip. Okay, and हमें यहाँ पे pin लगानी है. Okay, pins लगानी है. This is a tripod stand and we are going to give a heat to this strips. Now insert the end of all three bars into the flame at the same time. Observe for a while. What do you see? From which bar do the pins start falling first? तो सबसे पहले pin start falling from the end near the burner. बर्नर का एंड जहाँ पे है वहां से पिंस जल्दी नीचे गिरेंगे. ओके, बिकॉज जो बर्नर का एंड है, ओके, दैट विल हीट फर्स्ट. It means that transfer of heat takes place from the hot end of the bar to the cool end. मान लो कि आई एम गिविंग हीट टू दिस साइड, तो मुझे इसको जब मैं हीट करती हूँ ऑटोमेटिकली हीट विल ट्रांसफर टू द second rod, sorry, second end. So this transfer of heat from the hot part of an object to the cold part is called conduction of heat. उसको हम क्या बोलते हैं? Conduction. So in case of conduction, there is a transfer of heat from one same medium. तो ये रॉड है, रॉड का ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है. अगर मैं फर्स्ट एंड को हीट भी करती हूँ, दिस फर्स्ट एंड विल गेट हीटेड एंड हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम द सेम मीडियम टू द नेक्स्ट एंड ऑफ द सेम मीडियम. मतलब एक ही मीडियम है. And the pins on the steel bar fall completely laid. Heat is conducted quickly through the copper. Conduction of heat through a substance depends upon the property also. अभी हमने तीन लिए थे. We had considered the stainless steel, we had considered copper, we have considered aluminium. तो सबसे पहले aluminium, सबसे पहले copper heat हो जाएगा.
It is a good conductor. उसके बाद stainless steel and then aluminium. Now that the conductor heat takes place through the solid substance, so the medium is required for the conduction. तो जब भी हम conduction consider करते हैं, conduction is simply transfer of heat from one medium to in the same medium from molecule to molecule. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है दैट कंप्लीटली रिक्वायर अ मीडियम. तो मीडियम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट. नाउ हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड. अगर हम लिक्विड की बात करें तो ट्रांसफर कैसे होता है. वी नीड अ बीकर, वी नीड अ पोटेशियम परमैंगनेट, वी नीड अ बर्नर, वी नीड अ वाटर. अभी प्रोसीजर क्या है. We have to take some water in beaker, heat the beaker slowly on a gas burner, drop a few crystal of potassium permanganate. Okay, beaker को heat करना है, उसमें potassium permanganate डालना है. Now watch the water in the beaker carefully. What do you see? You will see streams of water going upward and coming back to the bottom. Okay, water के stream जो है it will go upward and it will coming down. Due to the potassium permanganate, this magnetic color of a stream can be identified easily. When the heating begins, the water near the bottom becomes warm and its density decreases and it moves upward, replaced by cold water coming above. And in this manner, heat is transferred by means of currents called convection. Okay, उसको हम convection current भी बोलते हैं. क्या होता है? See, the in case of convection, the transfer of heat takes place from one medium to another. So this is a burner. यहाँ पे ये plate पहले heat होगी. The heat will go to the glass and from the glass it will transfer to the water, and in this way there is a transfer of heat takes place, and that is nothing but the through the convection current. उसको हम convection बोलते हैं. Now let's talk about the apparatus. ये हमें करना है experiment. Take a test tube, piece of ice, wire gauze, burner and a candle. Procedure क्या करना है? Take some water in test tube, wrap a piece of ice in a wire gauze and drop it in a test tube. Okay. तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी लेना है, piece of ice जो है in a wire gauze and drop it in the test tube. तो टेस्ट ट्यूब में हमें वो डालना है. Ice wrap in a wire gauze में ice wrap है. It will sink to the bottom. Now, using a test tube holder, hold the test tube at a slant. थोड़ा सा उसको slant करना है, and with the help of burner, okay, we have to heat that. Okay, heat the upper part of the test tube. Test tube का upper part हमें heat करना है. Stop heating when the water starts boiling. Observe the piece of ice at the bottom. तो क्या करना है हमें, जब वाटर बॉईल होता है तब हमें हीट स्टॉप करनी है, and the heat does not reach the bottom though the upper part is heated. अभी इसमें वायर गॉज में आइस क्यूब रखा था, मैंने वाटर को तो हीट किया बट स्टिल व्हाट वाज हैपेंड. सी, द हीट डज नॉट रीच टू द बॉटम. बॉटम को हीट रीच हुई ही नहीं. How does this happen? The density of water decreases due to heating. Therefore, it cannot sink and the process of convection does not occur. Okay. तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं यहाँ पे upper end heat कर रही हूँ. So simply, whenever we are heating the upper end at that time, density of the upper water increases. The density of the upper water decreases. Okay. And the lower part has a more density, so there won't be a convection happen. Convection मतलब there won't be a transfer of heat from top to bottom. Okay, तो पहले example में हमने क्या किया था, we had the consider, see, we were giving the heat from a downward end, so obviously यहाँ इस पानी की density कम हुई, and density कम होने के बाद it was going to the upper part and there was a convection was happening. लेकिन in this case the upper end of the water was heated and there was a no convection found. Now see, we are going to consider the next experiment. Light a candle and stand it upright.
Hold your hands on its two sides at some distance from the candle. Bring them closer. अभी कैंडल को जलाना है. Okay, उसके सामने खड़ा रहना है. Hold your hands on its two sides at each distance from the candle. What do you feel? Have you warmed yourself near the bonfire or the morning sun winter? The sun millions of kilometers away from us. There is no air between the sun and the earth atmosphere is the only thin layer close to the earth. तो earth के around only there is a atmosphere. तो earth के बाजू में क्या है? Only the atmosphere, and the जो भी heat है sun की that get transferred through this atmosphere, and the transfer of heat that takes place in this way without medium is called radiation. मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, only the atmosphere is present around the earth and there is no medium, तो उसको हम बोलते हैं radiation. Radiation is simply the medium is not necessary, the transfer of heat takes place without a medium. So heat reaches us used mainly by radiation, उसको हम बोलते हैं radiation. Okay, now let's talk about the wonder of science. Radiation of heat takes place from many objects in nature, such as the trees, mountains, stones, roads. A camera has been developed which uses this radiations to make surrounding visible at night. Okay, so camera is developed just to make the surrounding visible at night. Radiation की वजह से you can able to see the different things, mountains है, stones है, roads है. Now, इट इज जो रात के भी पिक्चर्स प्रॉपरली मिलते हैं, इट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारे कैमरा. Using this camera, it is possible to keep a watch on the movement of the enemy during the night. अभी रात को how we can identify or how where can we detect the movement of the enemy through this infrared camera. तो इस कैमरा से हम जो भी possible है the activities of enemy that can be identified through this infrared camera. Now, when heat rays fall on an object, a part of a heat is absorbed by the object and a part of heat is reflected. Some part of heat is getting absorbed and some part of the heat gets reflected. And जो substance रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं डिपेंड्स ऑन इट्स कलर is intrinsic property. They have their intrinsic property. So ability of a substance to absorb the heat radiation वो हमेशा उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. Now what we have to do, take a two aluminum tins of the same size, two small glasses, water, thermometer and black paint. अभी हमें क्या लेना है? Aluminium tins of same size, small glass लेने हैं. We need a thermometer and we need a black paint. तो हमें क्या करना है? Paint the outer surface of one tin with a black point and let it dry. Then both the tins place on a glass, each filled with the water at the same temperature. Cover the tins with the lids. Keep them in the sun for 2 hours and now measure the temperature of water glasses. What is the reason for the difference in temperature? तो जो black color absorbs the heat at a much extent, तो जिसको black coating है वो ज़्यादा जल्दी temperature absorb करेगा and वो उसका उस glass में जो water है वो भी जल्दी hot होगा, temperature उसका बढ़ेगा. So depend upon the color, it will absorb the most of the radiation. So black color absorb most of the radiation. So in that case, we can consider good and bad a conductor. Place a steel spoon, copper strip or rod. Divide from your compass box, pencil and plastic ruler glass. Pour a hot water into 60 to 70 degree का रहता है. Wait for a while, then touch the outer end of each object. तो स्टील स्पून अगर हम कंसिडर करेंगे, कॉपर स्ट्रिप हम कंसिडर करेंगे एंड डिवाइडर फ्रॉम योर कंपास. तो डिपेंड अपॉन द मटेरियल वो ज्यादा कंडक्टर कौन सा ज्यादा हीट पास करेगा. जो ज्यादा हीट पास करता है उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, जो कम करता है या तो नहीं करता उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर. तो जनरली कॉपर स्ट्रिप्स आर अ गुड कंडक्टर्स क्योंकि वो टेम्परेचर को इजीली कंडक्ट कर पाता है. सो कॉपर स्ट्रिप इज अ गुड कंडक्टर. उसके बाद आता है स्टील स्पून एंड देन द कंपास बॉक्स. ओके,
तो उसको अगर हम टेम्परेचर मतलब वाटर में डालेंगे तो जल्दी कॉपर स्ट्रिप हीट हो जाएगी, उसके बाद स्टील स्पून एंड उसके बाद कंपास बॉक्स। ओके, बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच कैन पास द हीट। जो हीट को पास इजीली करता है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, जो हीट को इजीली पास नहीं करता उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर। नाउ what interface will you draw from this? Some substances are good conductors of heat while some are bad conductors of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or a pot, but not through the plastic wood. We can hold a glass tumbler or a china cup full of hot tea easily in our hand, but not so in a steel or a copper cup. ओके अभी ये इससे क्या पता चलता है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, स्टील इज अ गुड कंडक्टर, वो इजीली हीट को कंडक्ट कर पाएगा बट नॉट द चाइना कप। इसलिए तो हम चाय चाइना कप में देते हैं ताकि हमारे हाथ को कुछ हमारे हाथों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, इट शुड नॉट गेट बर्न बिकॉज ऑफ द हीट। तो जो हीट को इजीली पास करते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, जो इजीली पास नहीं करते उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द expansion and contraction of a solid substance due to heat. So we will need a apparatus, a metal ring, metal ball and burner. इसके लिए हमें क्या लगेगा? We'll need a metal ring, metal ball and burner. तो क्या करना है हमें इस एक्सपेरिमेंट में? See, take a metal ring and a metal ball of such same size or the given size. The ball just passes through the ring. Heat the ball and check whether it passes through a ring. Now let the ball cool down and check whether it passes through the ring. The above experiment tells us that metal expands on heating and contracts on cooling. Okay, तो क्या होता है जब इसको हम अगर विदाउट हीटिंग अगर मैं इस बॉल को इस रिंग के थ्रू पास करूं तो बिफोर हीटिंग वो इजीली पास हो जाएगा। ओके, इट विल पास इजीली थ्रू दैट रिंग। लेकिन अगर मैं उसको हीट करती हूँ आफ्टर हीटिंग, हीट देने के बाद वो एक्सपांड होता है एंड ड्यू टू दैट एक्सपांशन ओके वो रिंग से पास नहीं होगा। सो solid expand due to heat and come back to the original state if heat is removed. However, the extent to which different solid expands is different. Okay, तो हमें ये पता होना चाहिए solid always expand due to heat and come back to the original state if heat is removed. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? See, why there is a gap at the joint of a rail and cement concrete breaches. Okay, तो ये गैप क्यों होता है? Just because जब समर सीजन में या फिर वो हीट की वजह से वो एक्सपांड होते हैं एंड जस्ट टू मेक द श्योरिटी सो दैट ब्रिज वोंट शुड नॉट गेट कोलैप्स एंड रेल्स का जॉइंट्स खराब ना हो, इसलिए गैप रहता है। नाउ talking about the expansion and contraction of a liquid due to heat, we have to take 500 ml of conical flask, 2-hole rubber stopper, glass tube, measuring ruler, thermometer, stand, wire gauze, burner, graph paper. Okay, we'll require all this 500 ml conical flask, 2-hole rubber stopper, glass tube, measuring ruler, thermometer, stand, wire gauze, burner and graph paper. तो अभी what procedure we will require? Fill the conical flask completely with the water. Insert the glass tube and the thermometer in the two hole of the stopper and fit the conical flask. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is a hollow tube और यहाँ पे ये hollow tube है, यहाँ पे ये thermometer है, this is a conical flask, it has a water, यहाँ पे है burner, okay, यहाँ पे है stand. Now, heat the water with the help of the ruler. Record the water level in the glass tube after every 2 degree rising temperature. तो हमें क्या करना है? We have to heat the water and we have to record the observation. अभी take about 10 reading. Observe what happens when heating is stopped. Draw the graph. Now, always remember when a liquid is heated, the distance between its particle increases and its volume too increases. This is called expansion of liquid. जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो लिक्विड भी
expand होता है and the distance between the particle changes increases, मतलब वो gaseous form में चला जाता है. And when it's expand, its temperature when its temperature falls, the liquid contract. तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एट दैट टाइम वो लिक्विड एक्सपांड होते हैं. अगर हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो दे गेट कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज अबाउट द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. टॉकिंग अबाउट द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैसेस ड्यू टू हीट. ओके, हमें अभी ये तो पता चला, वी हैव गॉट टू नो अबाउट दैट solid get expand on heating and liquid also get expand on heating. Both solid and liquid get contract on cooling. Now let's talk about the gas. गैस के बारे में पढ़ेंगे हम. We need a glass bottle, balloon and hot water. Fix a balloon on the mouth of a glass bottle. Hold this bottle in a hot water. What happens? The volume of a gas increases on heating. This is called expansion of gas. On the other hand, removing the heat, volume of the gas decreases. This is called contraction of the gas. मतलब गैस की अगर आप हीट बढ़ाते हो, in that case also it will expand. So there is expansion of the gas. And अगर हम उसको cool करते हैं तो in that case it will get contract. So this is for all solid, liquid and gas. Solid, liquid as well as gas all gets expand on heating and all gets contract on cooling. Now, Sir James Trevor was a Scottish scientist. He made the first thermos flask in 1892. So he was the one who made the thermo flask, and that is why called Devil flask. Even today, a Devil flask is used for keeping substance cold or hot. Okay, he made the first temperature thermo flask. Okay, and इसलिए उसको नाम दिया गया on his name, on his honor, Devil flask. Now, what is a thermos flask? You might have seen a thermo flask used for keeping tea, coffee, milk hot or शरबत, cold शरबत for a long time. What is the its structure? तो ऐसा structure कैसा रहता है? It has a double wall flask. It consists of two glass tube, one inside and other with the gap between them is sealed. And the surface of both the tubes are made up of shiny or silvery coating. अगर हम देखते हैं तो उसका सर पे शाइनी कोटिंग रहता है, उसमें डबल लेयर रहता है. The air between the two tubes is removed to create a vacuum. There is a protective jar of a metal or a plastic outside the tube. For a protection of the flask, pieces of sponge or a rubber are fixed between the outlet jar and the flask. तो प्रोटेक्शन के लिए स्पॉन्ज या फिर रबर उन दोनों के बीच में फिक्स किया जाता है, दो लेयर के बीच में, सो दैट देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन ऑफ फ्लास्क एंड द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन. तो यहाँ पे देख सकते हो आप थर्मो फ्लास्क. ओके, यू कैन सी दिस इज अ हॉट लिक्विड. यहाँ पे टू लेयर है. ओके, सो यहाँ पे सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास, दिस इज अ सिल्वरी सरफेस, दिस इज अ मेटल और अ प्लास्टिक जार. ओके, यहाँ पे स्पॉन्ज रहता है. दिस इज अ हॉट और कोल्ड लिक्विड जो है, यहाँ पे वैक्यूम है, देयर इज नो एयर. ओके, सो दैट देयर इज नो मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट एंड जो हीट रहती है वो मेंटेन रहेगी. So when a hot substance is placed in thermoflask, the heat going out gets reflected due to the shiny surface. तो shiny surface की वजह से वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है. In the inner surface, hence heat is not radiated. तो heat radiate नहीं होती, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है because of the shiny surface. And neither conduction, यहाँ पे ना तो conduction होता है ना तो convection होता है. And heat occurs because of the vacuum. And heat is not transferred to the outer cooler region because वहाँ पे vacuum है, medium नहीं है. Still a little heat is lost from around the lead and by small amount of the conduction through the glass. थोड़ी फार तो heat उसमें से चली जाती है because of the lead, and the hot substance does not remain as hot after 2 or 3 hours. 2 या 3 hour के बाद वो वही hot नहीं रहता just because of the lead, because lead की वजह से थोड़ा फार heat loss हो जाता है. Okay, so this is all about the chapter. In this way, we have successfully considered the chapter. We have completed the
portion of heat, how the heat get transferred, how through the conduction, through the convection, and how the solid, liquid, and gases get expand on heating and get contract on cooling. So here we have completed the chapter successfully. Thank you.